एक्सक्यूज मी सर। यस प्रकुल। सर ये मेरा अभी फर्स्ट लेक्चर है, अभी मतलब मेरा डिपार्टमेंट चेंज हुआ है। तो सर आप थोड़ा बता दो कि मेरे को अभी क्या क्या हुआ है। अभी हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर कंप्लीट होने वाला है। आप कहाँ से, किस डिपार्टमेंट से आए हैं? हेलो सर मैं ईई से, इलेक्ट्रिक एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग से। उसमें चल रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स वन। सर उसमें हमारा क्लिपर्स तक हो गया था। हाँ बस, तो फिर कोई हमारा यहाँ तो रेक्टिफायर अभी चल रहा है। तो सर कुछ सबमिशन वगैरह का भी मेरे को यहाँ पे फिर से कराना पड़ेगा सभी टीचर्स को? देखो मैं तो आपका आपका बैच कौन सा है? मैकेनिकल वन सर या 9 9? तो आप टीचर को बता देना और कि आपने सबमिशन कर दिया है। ये तो आपके लैब टीचर डिसाइड करेंगे, लैब या ट्यूट, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। ओके सर। ठीक है, थैंक यू सर। इवैल्यूएशन एट द एंड इवैल्यूएशन उन्होंने करनी है, सो यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू देम। ओके सर। ठीक। कोई मेकाट्रॉनिक्स का स्टूडेंट है यहाँ पर? Okay, so can you see the screen? Center tap full Yes, sir. rectifier. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we have 84. We can wait for 1 or 2 more minutes. Okay, so we have almost done the discussion of center tap full wave rectifier, and this was the waveform, output voltage waveform corresponding to a sinusoidal input. So for ideal diode, you will receive the waveform as it is in the positive half cycle, and the negative half cycle will be mirrored with respect to this. Yes, Rishabh? सर आपने बोला था पिछली क्लास में कि इसी क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेना कि पीआईवी का ग्राफ रियल डायोड में कैसे बनेगा। ओके ओके ठीक है, हाँ इसके नीचे बना देते हैं। ठीक है, सो VD. So we will draw one more graph, that is VD, and VD बनाकर PIV define होता है। ठीक है, so this is the graph for if we are using real diode. So if the maximum voltage magnitude of the voltage is Vm, the maximum magnitude of the voltage output voltage will also be Vm. And if we are using real diode with turn on voltage or knee voltage equal to Vk, so this will be the output waveform. Okay, up to this point diode will be off, then it will get on, so you will receive a sine wave, but this sine wave will be Vm minus Vk sine omega t, like this.
ये संचित। सर आप ये फुल वेव रेक्टिफायर बना रहे हो ना? मैं अभी अभी आया हूँ। हाँ, जो सेंटर टैप का जो पूछला है वो रिकैप कर रहा हूँ। ओके अभी सर। मतलब फर्स्ट क्लास है या नो नो, अभी मैंने मतलब ये क्लास ज्वाइन की अभी रिकैप कर अभी। रहे हैं? अभी रिकैप। हाँ जी हाँ जी। So the Vm minus Vk sine omega t, this kind of equation will be there. So now PIV, PIV is measured for is calculated for the diode which is off, peak inverse voltage. Okay, so we can assume that for positive half cycle, let us assume that positive half cycle has appeared. So plus is at this point, minus is at this point, and diode will be in off state. So you can open this diode. Okay, so now you have to draw. Rishabh has asked me to draw waveform across this diode. ये तो बना दिया था PIV का, लास्ट टाइम ये बताया था ना आपको कुछ। चलो कोई नहीं, फिर बता देते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू determine the waveform of PD. Okay, so this, if you apply KVL in this loop, so voltage across this diode will be this. Yes, Rishabh? सर आपने पिछली बार रियल डायोड का बताया था, मैं इस बार मतलब आइडियल डायोड का बताया था, इस बार मैं रियल डायोड का Okay, बता okay, रहा हूँ। अच्छा, okay, so okay, fine, okay, got it. So this will be now instead of Vm, you will have Vn minus Vk. Okay, the difference is that now instead of this V0 is equal to Vn, V0 will be equal to Vn minus Vk. Okay, so now if you apply KVL across this loop, voltage drop across this diode will be Vin minus Vk, and here it is again Vn. So it is 2 times Vin minus Vk. This will be the difference. Vk का difference होगा. गुरकीरत. यस गुरकीरत, कहाँ भाई, कोई डाउट है आपको? आप हैंड रेस कर रहे हैं गुरकीरत. ओके, so graph will be same. Okay, graph will be same reverse direction में ऐसे. This peak point will be Vm 2 times Vm minus Vk. बस ये डिफरेंस होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस इसका गैप होता है और कुछ नहीं होता. Vk का गैप आ जाता है इसमें, ठीक है. KVL लगाओगे तो this is V in minus Vk, this is V in as it is. So mod of Vd is something like this, and obviously it will be in reverse direction. ठीक है. Okay, so we were calculating VDC. I think we have already calculated VDC for this, and the value was 2 Vm by pi. So this derivation VDC will be equal to integration 0 to t by 2 V out dt divided by integration 0 to t by 2 dt, because this is your output waveform, and now the time period of this wave is t by 2. Instead of t, we have a wave which is periodic, and the time period is t by 2. So this integration will be 0 to t by 2 Vm sine omega t dt, and in the denominator we have t by 2. So you have already performed the integration of this during the half wave rectifier, and the value is Vm by pi. Okay, and this 2 will move up to the numerator, so you will have 2 Vm by pi. So obviously the average value is doubled, because between time period 0 to t, now you are getting two waves. Okay,
In half wave rectifier, you are getting only one wave. So now the one thing is that now you are measuring for half amount of time, that is t by 2. And even if you measure for full amount of time, you are getting 2 waves. So obviously the values will be doubled. Vrms will be given by again by the same formula, integration 0 to t by 2 v out square dt. And in denominator, you have 0 to t by 2 dt, root mean square. So taking square of this, integrating it, taking average, and then taking under root again. So this you can solve. This I leave it as a practice for you. So the value will be Vm by root 2. Yes, Aviral. सर सेंटर टैप में जो वी इन आता है वो हाफ हो जाता है ना, क्योंकि वो 2 में डिवाइडेड है. वो वी इन हमने दिस वी इन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वी इन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस वी इन. इस वी इन की बात नहीं कर रहे हैं हम, इस वी इन की बात कर रहे हैं. और अगर आप देखेंगे तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है 1:2. सो ये अगर vi है तो ये पूरे के अक्रॉस 2 vi होगा, तो हाफ होगा तो एक में vi आ जाएगा. ठीक है, बट आई एम सेइंग जो प्रैक्टिकल में किया था वो स्टेप डाउन से किया था ना. दैट यू कैन देयर इज अ ऑप्शन टू सेट द प्राइमरीज टू सेकेंडरी रेशियो. अगर आप तो आप उसको 1/2 कर लोगे तो स्टेप अप हो जाएगा, 2/1 कर लोगे तो स्टेप डाउन हो जाएगा. ठीक. You have to consider this VI. Yes, you are right. हमें this ये वाला VI consider करना है. Fine. Not the entire induct, मतलब not the entire coil, बस वो जो half है. हाँ बिल्कुल. ठीक. Fine. Got it. Okay. We have Ayush. Yes, Ayush. सर इसमें जैसे आपने KVL लगाया, वो आपने ये नीचे वाले सेक्शन में लगाया था, ऊपर वाले में? किस चीज के लिए आप पूछ रहे हो? PIV के लिए? यस सर. जो भी डायोड ऑफ होगा, अगर D2 ऑफ है तो नीचे लगाएंगे, D1 ऑफ है तो ऊपर लगाएंगे, सेम चीज आएगी. तो सर हमने नीचे लगाया, आपने लिखा है V in माइनस V, ओके, VM माइनस V in माइनस V के प्लस V in माइनस V के इसके क्रॉस है और V in इसके क्रॉस है. नहीं सर, V in माइनस V के किसके? आपके यहाँ से VD के. आपके यहाँ से डिस्टर्बेंस आ रहा है. So this V in minus Vk will be across this resistance. ठीक है, and V in will be across this coil. Coil के across कोई ड्रॉप नहीं होगा. इसके क्रॉस जो V in माइनस Vk है वो इसी वजह से है क्योंकि ये डायोड कंडक्ट कर रहा है और यहाँ पे प्लस माइनस Vk का ड्रॉप होगा, तो V in माइनस Vk. सो नेट वोल्टेज V in इस कॉइल के अक्रॉस, दिस इज द कंप्लीटेड लूप एंड Vk से रिड्यूस हो जाएगा, सो दिस इज V in माइनस Vk. ओके, सो प्लीज आप थोड़ा सा रिवाइज किया करिए. ठीक है, सारे स्टूडेंट्स को मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली ये मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो पुरानी चीज है उसको दोबारा से बताने के बाद भी मुझे रिपीट करनी पड़ रही है. सो आई एम फीलिंग दैट यू आर नॉट रिवाइजिंग. सारा मटेरियल अपडेटेड है, इस तरह से तो सिलेबस आगे बढ़ ही नहीं पाएगा फिर कभी. ठीक है, तो वैसे भी हम काफी पीछे चल रहे हैं क्योंकि मैं आराम सारे डाउट्स ले रहा हूँ. सो प्लीज थोड़ा सा रिवाइज करिए चीजों को. Yes, Rishabh, आप हाथ you can lower down your hand if your doubt is okay. So ripple factor is VAC by VDC, and I have already told you the relation between AC RMS plus DC voltage. So VRMS square is VAC square plus VDC square. And I know the value of VDC, I know the value of VRMS, but I don't know the value of VAC. So VAC square can be written as VRMS square minus VDC square. So I have instead of VAC, I can put under root of V square RMS minus V square DC divided by VDC. So put the values, okay, instead of V square RMS, put Vm by root 2 and V square DC, put 2Vm by pi. You will get 0.48. So these are the parameters, performance parameters for center tap full wave rectifier. So VDC is 2Vm by pi, so that is 0.636 Vm. VRMS is Vm by root 2.
RF ripple factor is 0.48. Efficiency, we will calculate efficiency in the next slide, it is given, and PIV is 2 VM. So except for efficiency, we have calculated every other parameter. Okay, so efficiency of full wave rectifier, assuming that diode has a finite resistance in forward bias. Okay, so rectification efficiency, eta is DC power consumption divided by input AC power. So PDC divided by PAC. So PDC is I square DC into RL. Okay, so I square DC is 2 into IM by pi. So VDC is 2 VM by pi. So you can apply Ohm's law and you can calculate IDC as well. So IDC, if you apply Ohm's law in this, so it will be VDC is equal to IDC RL. So IDC will be equal to VDC by RL, and it will be now you can substitute the value of VDC. Okay, so it will be 2 IM by pi whole square RL. Total input power PAC is I square RMS into RD RL, assuming that diode has a finite resistance in forward bias. You can add the resistance of coil as well, like we have done in the half wave rectifier. So one more factor RS will be there. Okay, but generally we avoid that. So PAC is I square RMS into RD plus RL, and I square RMS can again be calculated by Ohm's law. So that will be IM by root 2 whole square. And rectification efficiency is eta, that is PDC by PAC. So putting the respective values and multiplying by 100 so that you obtain the value in percentage. So cancelling the common terms and calculating the constant values, you have 81.2. Earlier it was 40.6 for half wave rectifier. Now it is 81.2, almost exactly double. And in denominator, you have 1 plus RD by RL, because that depends on the external values. So this shows that the rectification efficiency of a full wave rectifier is twice that of a half wave rectifier under identical condition. And the maximum possible efficiency can be 81.2. When it will be 81.2? When RD is very, very less than RL. Means if you have an external resistance like 10,000 kilo ohm or 5,000 kilo ohm, and your diode resistance is like 25 ohm, so 25 plus 10,000, you can approximate it to 10,000. Okay, so the RD is very, very less than RL. So in this case, the efficiency will be 81.2. Otherwise, it will be 1 point something, and it will be approximately 80 like this. Still the double value. So this is all about the parameters of full wave rectifier in context to our syllabus. Now we will study the second configuration, that is full wave bridge rectifier. Okay, so this is a kind of a bridge. I hope that you have done the practical of Wheatstone bridge. Yes, नीलम सर ये डेरिवेशंस आएंगे सर पेपर में? आ सकते हैं. ओके सर. ओके, हाफ वेव का मैंने करवाया, बाकी आपने प्रैक्टिस करनी है और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो. फिर इंटीग्रेशन में सिर्फ 0 से t/2 का फर्क है, बाकी सब वही है. ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए उसको एक बार. Okay, so this is the schematic of full wave bridge rectifier. So we have total 4 diodes, D1, D2, D3, D4. Resistance is connected between point A and B. Okay, so need for center tap is eliminated. You can directly give the AC source between the point this X and Y. Okay, so this is the advantage of this full wave bridge rectifier, that center tap is not required. The obtaining a center tap coil, I have told you that identifying the center point and taking out connection
it should be very precise, because the delta amount of shift will, if this is not center point, you have vi minus delta, vi plus delta, this variation, and the waveform will be distorted. So this can be avoided by using the full wave bridge rectifier configuration. And even if you have to use the transformer, you don't need a center tap. You can just use the normal transformer. So you can give V in to the primary coil, and this is V primary, and V secondary can be obtained across the secondary coil. So even if you want, you have to use the transformer, you don't have to use the center tap. So this constraint is removed. But the disadvantage is that you have to use 4 diodes, and we will see that what is the disadvantage of using 4 diodes. Okay, so first, considering the ideal case. So considering the positive input cycle, first half of the input cycle, and ideal diodes. So plus will appear here, minus will appear here. So you can see that when plus will appear here, minus will appear here. D2 will be in on state, and because of this is minus. So D3 will be in on state because N side of D3 is connected to minus. And D1 is off and D4 is off. Okay, so this is the loop. Current will flow from plus direction, then this diode, then in this from right to left, and then to diode D3, and again back to the negative supply. So this is the complete cycle. So you can see that the direction of current, flow of this current through the resistor is from point A to B. We have assumed that plus this point we will consider as positive while measuring the voltage, and current is also moving from this A to B. So this polarity of this point will be positive, that we have assumed. So this V0 will follow V in exactly. So this is the case. V out will be exactly equal to V in for 0 to T by 2. So if this is Vm, this is again a Vm. Okay. Okay, so that was for period T equal to 0 to T by 2. D2 and D3 are conducting while D1 and D4 are in off state. Now negative cycle will appear. So this for time period T by 2 to T, D1 and D4 will be conducting. So D1 is conducting, D4 is conducting, D1 and D4 are conducting, and D2 and D3 are in off state. So this is D2 and this is D3. So these are in off state, and now current will flow from this plus point, then from point A to point B, and then from D1, and then again back to minus. So again, you can see that current is flowing from point A and B, and positive. We have assumed this point as positive. So the polarity is not changed. The waveform received in the previous case will be similar to the waveform received in this case. So again, we can draw input waveform. So V out will be equal to mod of V out will be exactly equal to mod of V in, and the polarity will be same, that is positive direction. So again, you can draw a positive sine wave in the positive axis, and the highest magnitude will be Vm. So this is the simple, very simple operation of full wave bridge rectifier for ideal diodes. Now what will happen? Okay, so you can again calculate VDC. Similarly, VDC can be calculated by performing the integration. So I am not writing the formula because the formula is same that we have used for the center tap rectifier. So this will be 2 by pi, 2 Vm by pi. So 1 by pi is 0.318, and multiplying it by 2 gives you 0.636. So 2 by pi Vm. If this is Vm, this will be 2 by pi Vm. Okay, and now what if you are using, let me check, we have, okay. So now what if we are using a real diode? So I can take it here itself. So if you are using real diodes, so at any time, you can see that 2 diodes are in on state. You can see that
two diodes are in on state. So now instead of replacing it by a short circuit, what I can do, I can replace it with a voltage plus minus Vk. So in place of this D2, I have replaced plus minus Vk, and in place of D3, I can again replace, instead of short circuit, I can replace the diode D3 with a voltage source of this polarity plus minus Vk. Okay, now if you move across this loop, so V out, you can see V out if you move across in this manner. So V out will be equal to, first this voltage source will appear. So okay, so I can write V in because of this. This is opposing it, so minus Vk, and this is also opposing it, so minus Vk. So V out is equal to V in minus 2 times Vk. In center tap, you are having V in minus Vk. In this, because of two diodes are in on state, the factor will be 2 Vk. Okay, so now the waveform will be something like this. If this is your input waveform, okay, this is V in, this is T. So now instead of Vk, you have to consider 2 Vk boundary, because two diodes are in series. Two diodes are in series at any time. So if this is point A, this is point B, VA minus VB should be equal to 2 times Vk to turn diode on. Okay, these two diodes are in series. Okay, so total 2 Vk amount of external voltage is required to turn this diode on. So now we will draw this line around 2 Vk. Okay, so up to this 2 Vk, your diode will be off. So V out will be also 0, because all the diodes are off. Okay, now at this point, D1 and D3 will turn on, and you will receive a sine wave, but this sine wave will be V in minus 2 times Vk. Okay, something like this. So you will receive a sine wave, and again at this point, the diode will be off. Then for the negative cycle, again you have to wait for this 2 Vk, and you will receive waveform like this. So now instead of Vm, yes, Chirag, I am coming to you. The maximum voltage will be Vm minus 2 Vk. So this is the disadvantage. Additional 1 Vk drop is there. Yes, Chirag. Sir, I have just one doubt. So can you go to the previous slide? Yeah. So the current flows from which part? From bottom to top, from top to bottom. When positive cycle will appear, plus is here, minus is here. So current will flow from this positive side. This diode is on, so it will find path through this, and from A to B, and then like this. So the voltage across this is positive. So V out will be equal to V in. And then minus Vk, so can you explain this part again, how it is direction? Can you explain this part again? Because current flows from top to bottom, and the polarity, it's facing the positive side of the battery, so it will be positive Vk. Again, it flows to the resistance. Then how the direction changes, or how the sign changes? Can you explain it again? No, I'm not getting your question. What you are asking means how the sign changes? Can which V sign? out is equal to V out is equal to V in minus Vk minus Vk, right? So, it flows from point positive from top to bottom. How the sign of current change, sign of this changes, V in, how it is minus Vk. Okay. So this is your plus point,
and this is your plus minus Vk. Okay, now I am ignoring this off diodes. These are open Okay, sir. circuits, so you need to draw this. So from point X, okay, this point, now I have current is flowing through this. So okay, this is in zigzag manner. I am drawing it in a simpler manner, just twisting the wire in horizontally and vertically. That's it. So No problem, sir. from point X, then we have this Vk, then we have this resistance. This is R. Okay, so this is point A. Okay, this is point A. This is our point B, and then from B we have again one more voltage source of magnitude Vk, and then this minus terminal. So this is my point Y. So current is flowing like this, in this way, like this. So if we write down the equation, what's the sign of voltage? Like it current flows from X to Y direction, so it faces Vk, and it faces the positive direction of it. So it will be positive, right? Here it is minus Vk. No, you apply KVL in this, na? Like KVL process, can you explain again, sir? Because I get confused for that part. Sign. So okay, so I am assuming that when I will travel from this first sign encounter, first this is minus, this is plus, so I will put minus sign first, like minus, this is Vn. Okay, this is minus, so I have written minus Vn. Minus Then Vn. this source is appeared, so plus, I have encountered its plus terminal, so plus Vk. Okay, and this is my V out. So I am writing as it is, V out as it is. I don't know V out. So the direction of voltage input is minus, negative. अरे अभी तो केवीएल आप कैसे लगा लो अब इसमें? तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है ना, मतलब थोड़ा केवीएल वाला भूल गया मैं. इसलिए मैंने कहा आपको फर्स्ट क्लास से, मैंने एक क्लास पूरी केवीएल के लिए लगाई थी. बहुत सारे कन्वेंशन है. देखो, एक कन्वेंशन है कि जो पहला साइन आएगा, ये आपकी जो भी बैटरीज है, ये जो भी आपका सोर्स है, तो जो भी पहला साइन आएगा, माइनस है, एक पोलैरिटी माइनस होगा, दूसरा प्लस होगा, तो जो पहला आता है वो लिख दो. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं उस कन्वेंशन से लिख रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता. अच्छा, उसमें ये क्या है कि मैंने यहाँ पे ये VA को मैंने पॉजिटिव अज्यूम किया है. मेरा ये पॉजिटिव, हाँ, ये मैंने पॉजिटिव लिया है. तो अगर इधर अगर मैं मेजर कर रहा हूँ, करंट भी इस डायरेक्शन में इसे भी फ्लो रहा है और पॉजिटिव आ रहा है, तो मैं पॉजिटिव एक्सिस में वेवफॉर्म बनाऊंगा. देखो, जब एक मिनट में थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ. ये जो सर्किट बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे प्लस पॉइंट है और यहाँ पे माइनस है, और ये वोल्टेज V नॉट है, यहाँ पे प्लस है. तो इस प्लस का मतलब ये है कि जब आप मेजर करेंगे इसको CRO या किसी भी DSO पे, अगर आपने एक्सपेरिमेंट 1 देखा हो तो यू यूज जनरली CRO और DSO और मल्टीमीटर, एनीथिंग. ठीक है, तो ये पॉइंट जो में है, वो आपके CRO DSO में भी दो कनेक्शंस होते हैं. एक पॉजिटिव के लिए होता है, दूसरा नेगेटिव के लिए होता है. तो मैंने ये अज्यूम किया है कि मैंने इस पॉइंट को पॉजिटिव माना है, ठीक है, और इस पॉइंट को नेगेटिव माना है. इसको मैं ग्राउंड भी कर सकता हूँ. तो अगर मैं अपने सर्किट में मैंने जो भी कनेक्शन किया है, अगर सेम इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसकी प्लस माइनस भूल जाओ. इस करंट को देखो आप, अभी प्लस माइनस भूल जाओ. करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉइंट A टू B. दिस इज योर रेजिस्टेंस एंड करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉइंट A टू B. तो इसके अकॉर्डिंग कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा VR. यस सर, VR ठीक है, होगा. तो प्लस किधर आएगा, पॉइंट A पे या B पर? A पे आएगा. प्लस A पे आएगा, और माइनस ऑब्वियसली B पे आएगा. तो जो मैंने अज्यूम की, जो मैंने कनेक्शन किया था प्लस पॉइंट अपने CRO के प्लस चैनल से, और मेरा जो इस कॉन्फ़िगरेशन है एट प्रेजेंट, उसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है वो A पे पॉजिटिव आ रहा है और B पे नेगेटिव आ रहा है. ये मेरे CRO की एक्सिस होती है. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. सर CRO क्या है ये? आपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट भी नहीं देखा, वही बात है ना. DSO, CRO, ग्राफर तो किया है, ग्राफर. ऐसे ग्राफर किया आपने? तो ग्राफर में आपका ये एक्सिस होता है ना,
T Yes, versus sir. V. So this is first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. So V जब V पॉजिटिव होगा तो ऊपर वाली एक्सिस में आएगा, V नेगेटिव होगा तो नीचे वाली नेगेटिव एक्सिस में नीचे नीचे आएगा। वो नेगेटिव कैसे? ये जो आपने पॉइंट यहाँ पे जो वोल्टेज एनालाइजर लगाते हो, एक पॉइंट पे वोल्टेज एनालाइजर लगाया, दूसरे को क्या कर दिया आपने? ग्राउंड कर दिया। तो ये बता रहा है कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव ही आ रहा है करंट फ्लो की वजह से, तो आपका ग्राफ फर्स्ट एक्सिस में आएगा, पॉजिटिव एक्सिस में आएगा। ठीक है, अगर करंट की डायरेक्शन ऐसी हो गई फ्रॉम बी टू ए, तो आप ऐसे प्लॉट करोगे नीचे। ये सिंपल सा फंडा होता है। और इस तरह से अगर हम केवीएल लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे मैंने पॉजिटिव माना है, तो ठीक है, मैंने अभी क्या अज्यूम किया था कि जो भी पहला साइन आएगा उसको मैं नेगेटिव लिखूंगा, तो यहाँ नेगेटिव। ठीक है, फिर ये पॉजिटिव प्लस वी के, इसका प्लस मैंने इसको फिक्स माना है प्लस, सो प्लस वी आउट एंड देन दिस अगेन माइनस वी के, दैट इज इक्वल टू 0. Keeping V out on the left hand side, taking the remaining terms to the right hand side, I have Vn minus 2Vk. चलो इससे छोड़ो, सिंपल इससे ही समझ लो। एक कन्वेंशन, दूसरा कन्वेंशन ये है कि आपने सोर्स से ट्रेवल किया तो वोल्टेज प्लस से माइनस की तरफ, वोल्टेज माइनस से प्लस मतलब इंक्रीज हो रहा है, वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में मैं प्लस लिखूंगा, तो प्लस वी इन। यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, तो माइनस वी के। यहाँ प्लस है। अच्छा सर, मतलब आप प्लस टू माइनस कर रहे हो तो माइनस वीक हो जाएगा। डियर 3-4 कन्वेंशन होते हैं केसीएल केवीएल लगाने के, इसलिए मैंने फर्स्ट क्लास में 2 कन्वेंशन बताए थे, एक ये वाला एक ये वाला, और मैंने कहा था आपको जो पसंद आए वो यूज कर सकते हो। इक्वेशन यही आएगा, कोई भी कन्वेंशन लगाओ। ठीक है, यू आर प्रोवाइडिंग सम इनपुट, आप कोई एनर्जी दे रहे हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड यू विल रिसीव सम आउटपुट। ओके, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है? इनपुट एनर्जी जितनी है, आउटपुट एनर्जी इससे ज्यादा तो नहीं होगी, उतनी ही होगी। तो इस सर्किट में जो वी आउट जो है आउटपुट एनर्जी, वी इन आपने इनपुट दिया और टू वी के डायोड ने अपने अक्रॉस ड्रॉप करवा लिया। सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है। वी इन आपने इनपुट दिया, तो वी आउट वी इन से तो ज्यादा हो नहीं सकता। ओके सर। आप हमेशा अपनी वो जब कुछ समझ में नहीं आया तो यार, वो मेरे एक बड़ा फेमस एग्जांपल है, मैंने काफी बार दिया है, ये वाला याद कर लिया करो। F इज इक्वल टू ma, फ्रिक्शन 2 न्यूटन। तो आगे मिनिमम कितने डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे? ऑब्वियसली 1 न्यूटन लगाओगे। F minus 2 is equal to ma। 2, तो यही हो जाएगा। तो यहां से एनालॉजी कर लिया करो, बहुत सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो फिर से सब स्टूडेंट को मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज प्लीज केवीएल केसीएल, देखो हम कुछ नहीं लगा रहे, पूरे सर्किट में केवीएल केसीएल लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आगे बीजेटी, सीमॉस और बड़े कॉम्प्लेक्स डिवाइस, सिर्फ यही करना है, इक्विवेलेंट मॉडल, you have to change it into equivalent models and then the remaining part is applying KVL। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर, मल्टीसिम भी यही करता है, KVL ही लगाता है और कुछ नहीं करता है। दिस इज ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स। सो फिर से मैं बोल रहा हूँ, KVL फिर से रिवाइज करना, क्योंकि पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स KVL KCL ओम्स लॉ इस पे ही खत्म हो जाती है। ठीक है, एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि मैं डायोड को इस VK से रिप्लेस कर दूंगा, ऑन रहेगा, तो बस फिर KVL KCL लगाना और कुछ नहीं करना है। ओके, क्विज भी आने वाला है, अभी क्विज विज भी हो जाएगा आपका, तो रिवाइज कर लेना इस चीज को। ओके, तो यहाँ पे आते हैं, जो हमारा डिस्कशन चल रहा था कि इफ डायोड इज रियल देन V in minus 2 VK, you will have V in minus 2 VK. So this is the extra drop of VK because of one additional diode, and remaining parameters. Okay, this is VDC, that is 0.636 VM, and if you are using real diode, this VDC will be replaced by 0.636 VM minus 2 VT, that is 2 by pi VM minus 2 VK. So सारा फैक्टर 2 VK से रिप्लेस हो जाएगा, rest all will be same. Okay, so try to derive, now this is your homework, you have to derive first
VDC, I have already done this. Okay, PDF and video lecture is available, but you have to try it for yourself. Try deriving VRMS, I have also done this. Okay, रिपल फैक्टर मैंने ये भी डिराइव किया. इसमें तो डिराइव क्या करना है, वो रेशियो लेना है. तो ये दोनों को डिराइव करके एक बार आपको सेल्फ एक्सरसाइज करनी है. ठीक है. एंड द रिमेनिंग इंपॉर्टेंट थिंग इज रीकैप. केवीएल आपने देखा है, केसीएल का तो अभी इतना जरूरत नहीं पड़ा, बट स्टिल आई नो केसीएल में भी लोग कंफ्यूज होते हैं. सो रीकैप केसीएल केवीएल, ओम्स लॉ, polarity concept. So please do revise this first, then try this VDC, deriving VDC, VRMS. Okay, so आपको कुछ नहीं करना है, जो ऑलरेडी कराया जा चुका है आपको प्रैक्टिस करनी है काइंड ऑफ. इसलिए मैंने हाफ ब्रिज रेक्टिफायर के लिए डिराइव नहीं किया, ऑलरेडी सब सेंटर टैप का ही फॉर्मूला लगना है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर full wave rectifier. Now what we have to do, we have to start clippers, and in this again I am repeating, in this clipper and we will study clamper, we have to follow one simple rule, that if your diode is on, if your diode is idle and it is on, you have to replace this by a short circuit, and if this is off, you have to open circuit it. Okay, and for real diodes we have to use a voltage source of VK plus minus like this. And for reverse bias case, again you have to replace it by open circuit, minus plus. Okay, so this is the simple rule that we will follow again and again, and rest is again KVL, KCL, nodal theorems. That's it. So we have to start KVL. We have 5 minutes. Okay, so I hope that you have done this experiment in the lab. So we will see this in detail. So we have a clipper circuit, as the name says, clip. Clip means काटना. So clipper circuit clips the input waveform. This is the simple application of clipper circuit. Okay, so if this is your input waveform, V in T, so if you want to clip the entire positive part, so your output will be something like this. So this is V out, this is T. Okay, so entire positive part is clipped. So we say that this is positive clipping, and that kind of circuit, we will design a circuit. Okay. So this circuit is known as positive clipper. And if you want to clip the negative part, entire negative part, the output will be something like this. Entire negative part will be missing. Okay, this is V out, this is T. So this kind of circuit which has clipped the entire negative part, this is called negative clipper. Okay, and half wave rectifier is a special case of negative clipper. So half wave rectifier, this is the output waveform of half wave rectifier, is special case of negative clipper. Okay, so in this you have you are clipping the entire positive and negative part. Okay, you can clip the partial part also. So if this is your input waveform, you don't want to clip the entire negative part. You want something like this, something like this. So assume that this is 10 volt plus 10 volt, this is minus 10 volt, and this is, let's say, 6 volt. So from 6 to 10 volt, the part is clipped, deleted. So output will be something like this. V out
increasing from 0 to 6 volt, then it becomes a flat line because the remaining portion is clipped. Then again from 6 to 0 it is decreasing, and then negative part as it is. So this is called this is partial clipping. Okay, so we will also see that how to design this circuit, or any circuit is given, so that kind of output is expected. Similarly, you can have a partial negative clipper. So positive part will be as it is, the negative part will be somewhat clipped. So this is also example of, this is positive and this is negative. Okay, so you have two types of clippers. First is positive clipper, that clips the positive part. Second is negative clipper. And next, you will also see that positive clippers can be derived by two configuration. First is series positive clipper, and second is parallel. Okay, just you have to interchange the configuration of diodes and resistance. And similarly, we have a series negative clipper and parallel negative clipper. So first, negative clipper, because we have already studied the half wave rectifier. So series negative clipper, you have input voltage source. In series to this source, you have diode and you have one resistance. So this is very simple circuit of series negative clipper. Okay, this is the point A and B. Between these 2 points, you will measure V out. Okay, so I do not need to explain this circuit because all the parameters and the detailed explanation has already been covered while the topic half wave rectifier. So you can directly draw the output waveform. So if this is V in, and if your diode is out ideal, this should be your V out. Positive part will pass as it is, it will clip the negative part. Positive part will be replicated exactly. Okay, for ideal diode. So this is for ideal case. Okay, so the remaining configurations, that is parallel negative clipper and parallel and series positive clipper, that we will continue. Tomorrow we have a class, so tomorrow we will continue this discussion. Okay, have a nice day. ओ काफी को डाउट्स थे, टाइम अप हो गया है, वो मुझे लीव करना पड़ेगा, सो आप अपने डाउट्स कल पूछ लीजिएगा.